welcome to the Vastav Show. And in today's episode, we have Dr. Amaey Parekh with us. Welcome, Dr. Parekh. Thanks for joining us. So Thank you, Amaey. let me tell you guys first about what Dr. Parekh do. He's a clinical psychologist and a dentist. So let's उन्हीं से सुनते हैं what he do and why he do what he do. Yeah. All right. So, thank you, Amaey. Yeah, thanks. So, hello everybody. I'm Dr. Amaey Parekh from Mumbai, and by profession, so I've done a couple of degrees. मैंने पहले dentistry किया 2010 में, bachelor's किया 2013. I did my master's, and for 6 years since then I was working only as a dentist because I already had a dental setup. मेरे parents भी dentist थे, तो मैं dentistry कर रहा था. But somewhere down the line, मतलब मैं satisfied नहीं था. I was not able to help people the way I wanted to. Plus, I had my own personal issues that I underwent. And in 2017-18, I underwent therapy for myself. मतलब मैं counselor के पास गया, मैंने खुद counseling लिया. And I realized कि as a even मैं जब स्कूल में था तभी भी मैं लोगों को इतना हेल्प करता था, मैं एडवाइस देता था, मैं गाइड करता था. बट ये जब से मैं I'm just doing dentistry, now I'm definitely helping people, but this is not the only thing I want to do. So in 2018, I actually attended a workshop called Mind Power Unlimited, and there I sort of made a new life goal कि मुझे dentistry के साथ और भी कुछ करना है, मेरे life purpose में और भी कुछ है. And I actually decided to pursue a second master's in counseling psychology and a PG diploma in art therapy. And I also got trained as a life coach. So last 2-3 साल से मैं काफी सारा पढ़ाई वापस कर रहा हूँ. At the age of 34 today, I have so a couple of degrees, and I'm doing dentistry for 3 days, and I'm doing psychology and counseling and coaching for the other 3 to 4 days. So I realized that helping people was something that I was really connected to and something I really wanted to do. And I realized that mental health, खास करके अपने country में, is a taboo. It's still a taboo. I mean, people are talking about it, but कैसे है कि local public बोले तो जैसे general you and me, counseling word सुन के समझते हैं ये तो पागल है, मतलब that's the first term. हाँ, बस यही हो जाता कि भाई मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास गए या साइकियाट्रिस्ट के पास, मतलब हम लोग पागल है. हाँ, ये एड़ा हो गया मुंबईया भाषा में. सॉरी, मुंबईया भाषा में वो कहते हैं एड़ा हो गया है बंदा. हाँ, ये एड़ा हो गया, एग्जैक्टली, यस. Okay, so this is a very unfortunate preconceived notion that people have developed, and although in the urban cities it is changing, मतलब metropolitan cities में change हो रहा है concept, people are now raising awareness about it, but as an individual, I felt it is my desire and my wish to contribute in whatever way that I can. And being from the medical profession, so I understood it even more. So I sort of now use a lot of techniques, not just counseling. I have learned a lot of other therapy techniques also. So ये सब combine करके I try and help people understand what day-to-day problems are, and समझ I try to explain कि भाई सब upset हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Stress आना कोई सबको होता है, एंजाइटी होना सबको होता है. There's nothing wrong with it. The problem is that we always try to subdue it or not talk about it. And बाद में एक ऐसा situation आता है कि we feel कि भाई हम life में ही कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब we actually go into that spiral and it goes down further and further. And हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों को बोल देंगे, घर पे ऐसे we'll chill out, एक vacation ले लेंगे. That is the attitude. What भाई सिंपल आंसर में प्रॉब्लम है, अरे चिल मार, कुछ नहीं होगा, 2 पैक पी लिया, शाम को मूवी चले गए. So it's an escape mechanism. It may give you a temporary relief, but it is not going to solve an underlying problem. So ultimately building up something called as emotional resilience, मतलब आपकी जो अंदर की capacity है problems को accept करने की, face करने की, emotions को handle करने का, and build your emotional intelligence. So that's what I primarily focus on, and that's what I try to help people with. So that's about me. Yeah, thank you. Yeah, talking about the emotional intelligence or emotional health. So people, जैसे लोगों के पास personality traits होते हैं, ठीक है. So correct. What are there are few personality traits we call a pseudo personality traits. मतलब उनको लगता है कि वो उसके personality के part हैं, लेकिन that is not a personality trait of that person. जैसे anger, या कोई लोग बहुत ज्यादा चुप रहते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, हमें लगता है कि वो उनके पर्सनालिटी का पार्ट है. लेकिन आई थॉट कि
वो पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होके वो समथिंग दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ सम अदर इशू. So this is one thing which what you're basically saying is, what we do is we label ourselves. हम लोग अपने आप को एक लेबल दे देते. अगर मुझे गुस्सा आया तो I am an angry person. Yes. But it is not said that I am a person who is experiencing anger. That is the problem. Yes. You are not your emotion, you are not your thought, you are not your feelings. आप वो thought आता है और वो चला भी जाता है ना. आप हमेशा थोड़ी फुल टाइम थोड़ी एंग्री रहते, या फुल टाइम थोड़ी अपसेट रहते, या फुल टाइम थोड़ी हंसते रहते. यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग कॉल्ड एज अ गैमेट ऑफ इमोशंस. मतलब आप हर इमोशन को एक्सपीरियंस करोगे. आर यू देयर अमित? जस्ट ब्लैंक्ड आउट. जस्ट सेकंड. ओके, yeah, you were saying something. Yes, so basically I was just saying that no, that's completely fine. So the problem is that we always tend to label ourselves as something. मतलब कि भाई ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ये हमेशा गुस्सा ही करता है, ये, या फिर ये हमेशा रोता ही रहता है. We always tend to categorize people, and it always becomes an always or must, or so these are all we call filters, which we have verbs that we have given to people, but that is not the truth. Okay, when you go for counseling or when you go for therapy, that is what the counselor actually teaches you, that you are experiencing an emotion and it is okay to experience that emotion. Go through that and let it out. That is the journey which we need to express. जब हम ये सूडो पर्सनालिटी की आप बात करेंगे या पर्सनालिटी की बात करें, पर्सनालिटी फैक्टर्स are definitely integrated and are play an important role. Like there is extroversion, there's introversion, there are like actually there are innumerous personality factors if you go to see. One of the most common tests which we use is MBTI, which is one of the most Myers-Briggs tests, is one of the most common factors, and it gives you a good picture of that person. Okay, this person would like to do this, or would be more inclined toward this. Yeah, his personality will be oriented toward this. But emotions are not necessarily a part of personality. That's what I'm trying to explain. That even a person who is an introvert may experience depression, and even a person who is an extrovert may experience depression. Okay. Yes. That does not. Emotion is a human quality. The severity of it may vary because of some personality factors, but सबको ये emotions experience होते ही है. It is normal. There is nothing wrong with it. The problem happens is we deny them. Yes. और कुछ लोगों को लगता है ना कि उनके पास पैसा बहुत आ जाएगा तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक हो जाएगा, या वो बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, ऑफिस चले जाएंगे, बहुत ज्यादा दारू पी लेंगे, बहुत ज्यादा ये कर लेंगे तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी. लेकिन डाउन द लाइन कुछ समय के लिए दे फील गुड, बट उसके बाद वो चीजें दोबारा आ जाती हैं. बराबर. So this is actually called like an addiction cycle. Okay, it's basically a dependency and addiction cycle. मतलब आप जैसे हम say let's take alcohol. Okay, या let's take smoking. क्या होता है कि जब आप पहली बार उसको करते हो, आपको ये रश हो जाता है, हाई लगता है, या whatever, you feel better. Now what happens is after some time उसका effect withdraw हो जाता है. Okay, so you come back to the moment. Now next time you experience stress or you experience that anxiety, your body knows कि भाई ये करने से मुझे अच्छा लगा था. Okay, तो dopamine again you again start doing the same thing, but problem is कि all this is again transient and temporary, and हर बार ये और addictive होता जाएगा. मतलब because आपका tolerance बढ़ जाता है. Exactly. एक पैक से दो पैक से चार पैक, चार से एक बॉटल पे पहुंच जाता है आदमी. Exactly. और ये actually एक emotional component है. वही हम लोग समझाते हैं कि एडिक्शन भी जो होता है, या when you look at any escape mechanism, these are called escape mechanisms. Call it maybe drugs, or call it just going on even sometimes just going on a vacation, running away, or spending. People actually spend money also to get some amount of pleasure. या फिर there are people who eat a lot. मतलब लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं because उनको खाने से अच्छा लगता है. So all of this actually has an emotional component to it. और ये वही होता है कि जब आप अपने emotions को balance नहीं कर पाते, आपके mental health को balance नहीं कर पाते, and it plays into your real life and it starts creating hindrances in your own growth, and it starts affecting your relationships also. आपका day to day life affect होता रहता है. पैसा भी you say कि भाई पैसा आ जाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पैसा से सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है. बट ऑनेस्टली किसका प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हुआ है? नहीं. कुछ समय पहले एक न्यूज आया था कि दीपिका पादुकोण के भी डिप्रेशन हो गया था. उनके पास तो पैसे की कोई कमी है नहीं. करेक्ट है ना.
और एक साधारण रिक्शा वाला भी खुशी खुशी अपना लाइफ स्पेंड करता है, उसको डिप्रेशन कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली। So it is, that's what I'm trying to say, कि पैसा है या स्टेटस या आपका उससे it is one of the factors, it is not the only factor. First of all, there are very a lot of factors. There are intrinsic factors and extrinsic factors. Intrinsic मतलब जो आपका खुद का पर्सनैलिटी है, जो आप हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, या फिर आपका जो अपब्रिंगिंग है, मतलब आपने जो सीखा है कि भाई कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या कैसे ये अभी जैसे men don't cry, we always hear men don't cry, या boys don't cry, I have a story on this. Yes, I'll tell you. I'd love to listen to it. Yes. So मेरा एक friend है, so when he was in college, so he used to cry whenever he watched some emotional movie, जैसे या लव स्टोरी या मूवी जिसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी, so he start crying in college. Okay, या टीवी सीरियल आता था पहले, सास बहू टाइप्स, तो वो देखता था और उसको रोने लगता था, ठीक है। तो उसके फैमिली वाले या उसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे, वो स्टार्ट, कैसा है, व्हाई आर यू क्राइंग, बी अ मैन, मैन अप, डोंट डू दिस, डोंट बी दैट पर्सन। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। सो कुछ समय बाद उसका रोना बंद हो गया, अब वो रोता नहीं था, ठीक है। तो देन ही आफ्टर द कॉलेज व्हेन ही स्टार्टेड हिज जॉब एंड एवरीथिंग, सो ही, उसको ना रोना आता था, नाउ ही डोंट नो हाउ टू लाफ ऑल्सो, ठीक है। ऑफिस अकेला रहने लगा, उसको हर चीजें इशू प्रॉब्लम होने लगी। when he went to that psychiatrist or psychologist, तो उसको बोला कि why you want to cry, मतलब रोना क्यों चाहते हो, बोले कि I feel like crying when I watch those scene, that's my emotion, ठीक है। तो तब उसको साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि you are suppressing that emotion, that is also emotion, और वो एक इमोशन को सप्रेस करने ना, तुम्हारा जो माइंड है वो हर तरह के इमोशन को सप्रेस कर दे रही है। तो वहां पे उसको ये प्रॉब्लम हो गया। नाउ ही डोंट नो हाउ टू क्राई, ही डोंट नो हाउ टू लाफ ऑल्सो। वो ही इज फुल ऑन इन, इट्स नाउ एट द ब्रिंक ऑफ हिज इन, उसको अल्कोहलिज्म में पूरा तरीके से डूब गया है। नाउ आई गेस ही इज लुकिंग फॉर दैट सम, क्या कहते हैं उसको, जो जिसमें अल्कोहलिज्म छुड़ाते हैं वो सब, रिहैबिलिटेशन सेंटर। यस, उसमें जा रहा है। तो सो इट्स मींस लर्निंग फॉर अस। ये इमोशनल नंबिंग जो हो गया है, इसको इमोशनल नमनेस बोलते हैं हम लोग। मतलब एक्चुअली नमनेस हो जाता है कि आदमी को इमोशन प्रोसेस करने के लिए भी परमिशन नहीं मिली है। मतलब यू आर नॉट इवन अलाउड टू एक्सपीरियंस दैट इमोशन बिकॉज यू आर कैटेगराइज के भाई इट्स नॉट राइट एज अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स। तो यही, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट दैट, कि भाई ऐसा नहीं है। मतलब people are allowed to experience emotions and go through all the problems that they are going, and it's okay to seek help. That's what I try to raise even on my page, and is basically I try to explain that only, it's okay to ask for help when you think you're not able to handle a situation. There is nothing wrong with it. Yes, आप रोने से आप छोटे नहीं है। मतलब if you cry it doesn't mean you are weak. Absolutely not. Yes. इंसान बच्चे रोते हैं ना। हाँ, हर बच्चा रोता है, लड़का हुआ लड़की हुआ सब रोते हैं ना। तभी तो कोई बोलता नहीं है कि नहीं रोना चाहिए। हाँ, तब तो हाँ बाबू ठीक है, इट्स गुड, ओके, रो रहा है। So as per statistics also, men tends to have a heart attacks. मतलब जो मर्दों में हार्ट अटैक्स ज्यादा होते हैं as compared to female. That's because female tend to cry, not because they are sad or something. It's they know how to express their emotions. वो खुशी में भी रो देते हैं, वो गुस्से में भी रो देते हैं, वो गम में भी रो देते हैं, ठीक है। But it's basically how to release your emotions. It's not necessarily be just crying, but the point is basically how to release your emotions and not keep them suppressed and not just suffer from inside. मतलब भाई ऐसा ही होगा, इतना rigidity अपने आप से, you become strict with your own self. आप अपने आप को ही punishment देते रहते। तो जो एक्चुअली काउंसलिंग मैं सच बोलूं ना, तो मतलब आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ थेरेपी, लाइक सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज, बट अल्टीमेटली आई हैव कम टू द सेम कंक्लूजन, भाई आपके अंदर एक बच्चा होता है, इट्स कॉल्ड एन इनर चाइल्ड, और आपके इनर चाइल्ड को जब आप छोड़ देते हो, पुश कर देते हो ना, आपकी लाइफ सुख हो जाती है।
because everybody wants that. At the end of the day, you need that inner child to be allowed to be free and be happy. And I've seen some or the other, that is what I come down to when I do any counseling session, or people have suffered a lot of times in their childhood, more than anything, because आपके parents के certain belief systems से जो आप पे लागू हो गए, they be pressured onto you. And in this current scenario, that is not possible. You have to understand the scenario 30 years ago to what is there today is totally changed, drastically different. Like compare भी नहीं कर सकते. It opposite poles now. Yeah, absolutely. So, in fact, the generation which I am seeing, in the current 20s to 35, in this generation, I am seeing that they are really getting aware, we do not want to experience this kind of problems anymore. We want to get help and do something about it. So that is a good change. Yeah. At least they are trying. They are speaking out. They are expressing themselves. Absolutely. Okay. And एक बच्चे में curiosity ज़्यादा होती है. So when you discover inner self, inner child, then you have curiosity, and curiosity brings your seeking answers. When you seek answers, then आपका mind काम करता है उस तरफ से नए क्वेश्चन को आंसर के खोजने में, बनिस्बत कि आप दूसरे तरफ उसको ले जाओ. ठीक है, पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है. आपको दिमाग में एक काम दे दिया तो उसको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब समझ नहीं आएगा फिर. नहीं मतलब आपका जब इनर चाइल्ड को एक्चुअली आप हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं ना, तो योर लाइफ एक्चुअली बिकम्स सडनली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज आपको दिखता है भाई, अच्छाई भी दिखती है जो ऐसे हम लोग को ऐसे बोले ना घोड़े का आपको एक रास्ता भेज दिया कि आपको जॉब ही करना है, आपको अपना पैशन ही फॉलो करना है. हाँ, तो आप जॉब के साथ पैशन फॉलो कर सकते हैं. मतलब if you have time, कर सकते हैं. You have to make your time. That is one other thing that I come across very often, that I do not have the time. I also say that I do not have the time a lot of times, because I know that I'm juggling 3 careers together. But I see that I have to make that time. I want to follow my passion, whatever happens. I realized that was what was lacking in my life, and after I have started following my passion, my life has improved drastically, and I am able to touch other people's life. आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं एक डेंटिस्ट होकर मैं नहीं करता ये बात ना. तो मंडे टू फ्राइडे आई आल्सो हैव जॉब, तो मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे आई डू दिस. ओके, करेक्ट. सो यू हैव टू मेक योर टाइम. यस, इससे क्या हुआ कि मेरा जो एंजाइटी का इशू था ना, वो खत्म हो गया एक तरह से. नाउ आई हैव something to do. You have a purpose, it's called a purpose. You have a purpose to do something that is beyond your own self, and where you're contributing to other people's life. So that's why it feels good, and you really start looking forward to these sessions. मतलब आपको ये planning करने में भी मजा आता है. हाँ, yes, I have been planning this from last week when we spoke. No, उसके बाद से, and after this I have scheduled 2 other interviews also. So I have been planning this for. I have writing the notes. I've been doing everything. So now it keeps me busy. तो इससे मेरे को जो पहले जो प्रॉब्लम्स होते थे ना, वो अब नहीं आ रहे दिमाग में कि मुझे ये करना था, ये हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहा, मैं जॉब में ही रह जाऊंगा. नाउ आई लाइक माई वर्क ऑल्सो. मैं मंडे टू फ्राइडे माई प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड. मुझे और अच्छा लगने लगा अपने काम में भी. Exactly. So when you have it happens. It actually starts happening the moment you start living your life in a direction which is steering you towards something meaningful. You will start liking things which you earlier used to find only complain about. मतलब आपको हर बार इसमें ये ऐसा था, ये प्रॉब्लम है, ये पॉलिसी हो गया, ये हो गया, हाँ इस देश ने उस देश पे हमला कर दिया. मतलब वो सब चेंज हो जाता है. That is how it is. That is what I direct. That is where even I want my clients, or when I help somebody, that is the ultimate aim that I also aim, look at कि भाई I want to put them on a path कि भाई वो लोग आगे बढ़े, मतलब कुछ करना चाहे, because that's when they will actually be more motivated, and the chances of relapse also decrease. Okay, मतलब somebody going into depression or it decrease, and they are able to help others, which is even better. Ultimately, I want that is my purpose. I want people to be able to empower each other and work forward. So mental health is I call this basically counseling is आप -10 पे है तो -10 से 0 तक काउंसलिंग का काम है, और 0 to +10 लाने के लिए कोचिंग का काम है. So that's how I
डिस्क्राइब माय क्लाइंट्स, यू नो, कि भाई आप अगर एकदम बॉटम में हो तो पहले आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, आप न्यूट्रल होके फिर आप पॉजिटिव में जा सकते हो। आपको चेंज होने की इच्छा बतानी पड़ेगी आपको, यस यू वांट टू चेंज, देन ओनली एनीवन कैन चेंज यू, अदरवाइज तो आप एब्सोल्युटली, आप श्री कृष्ण का भागवत गीता का डायरेक्ट आप प्रवचन सुन लो, आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, कि आपको डिजायर होनी चाहिए कि भाई मैं I want my life to get better, I want to get better, then it is possible to do something about it. हाँ, तो अभी मेरा एक और फ्रेंड है, तो ही यूज्ड टू राइट, ठीक है, उन्होंने बुक लिखते थे पहले वो बिफोर द मैरिज, ओके, उन्होंने एक बुक उनका पब्लिश हुआ, ही राइट वेरी गुड, लेकिन आफ्टर मैरिज नो, सो ही लेफ्ट दैट राइटिंग पैशन, नाउ ही इज 100% इनटू हिज जॉब एंड एवरीथिंग, ओके, ही इज नॉट, मींस उनको बुरा नहीं लगता, but he sometimes he feel that sad, like why I didn't pursue that, okay. Correct. So after doing your going for your career or doing your job, it doesn't mean you have to leave your passion, or at least if suppose you don't have any passion, you don't have any other skills, at least build some hobby. Yes, you know, so I actually have a program on this. I mean, I help people discover their life purpose, you know, because I understand that not everybody knows what they want to do, and even if they don't know what exactly they want to do, to at least identify what they would like to do, मतलब at least, you know, because ये आप छोटी चीज करो, आपको डांसिंग पसंद है, आप डांस करो, आपको ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग करो, आपको मस्ती खेलना है, खेलो, बट वो करो, you know, थोड़े टाइम के लिए भी आप अपने लिए वो करो. It's a lot of self care, a sort of self love involved in that, and once you are in that zone of, you know, being happier, automatically you will be able to handle things better, and आपके बाजू के relationships भी improve होने लगेंगे, because you will be in a state to accept कि हाँ भाई ये problem है, मैं इसका क्या करूँ. You know, so this is all interrelated. आप जो भी बोल रहे हैं ना, सब interrelated है, मतलब ये self love बोलो, life purpose बोलो, you know, falling into emotional spiral, ये सब actually सब घूम फिर के एक ही है कि ultimately you have to start loving and accepting yourself and allow yourself to experience the good times and the bad times, develop the emotional resilience for the same, and then look forward towards some passion or, you know, for some motivation that is going to steer you forward to a more better direction. Now there is a trend is अभी जो corporates में trend start हो गया है, Wanderlust something weekend getaway types, okay, so they हर weekend they went for, they go for the Simla, Manali and everything like that, ठीक है, इधर आपका ऊटी या खंडाला या आपका गोवा चले गए, ठीक है, मुंबई से, कोलकाता से लोग दार्जिलिंग या समथिंग दीघा वगैरह चले गए, ठीक है, तो जब वो जाते हैं वहां पे उनको बड़ा अच्छा लगता है, दे फील वेरी गुड एवरीथिंग, व्हेन दे अगेन वेंट टू देयर जॉब पे वापस जाते हैं, देन अगेन द सेम द फीलिंग स्टार्ट, जिस फीलिंग को खत्म करने के लिए वो गए थे घूमने के लिए, वो फीलिंग दोबारा आ जाती है उनको, ठीक है कि हाँ, तो उनको ये तो एक्चुअली एक 2 दिन का वेकेशन जैसे हो गया, सपोजिंग 2 दिन का मिनी वेकेशन आप ले रहे हैं, तो वो तो आपको सिर्फ एक छोटा स्पॉट ऑफ जॉय देगा ना, पर उसमें आपने कुछ भी एक्चुअली अचीव नहीं किया है या कुछ भी अपने लिए तो नहीं किया, ये तो सिर्फ ऐसे कुछ नहीं है, अच्छा चलो ऑफिस का काम नहीं है, छोड़ के भाग के चलो, मतलब वैसा हो गया. So there is no sorry, it's escape from that reality. Yeah, it's an escape. Yeah, exactly, it's an escape. See, when purpose is not an escape, a hobby is not an escape. Exactly. A hobby is actually something that you would like to do because you know, and that time you don't know where the time goes. You know, it's not an escape. It's in fact a it's something that rejuvenates you. मतलब actually आपको एक पूरा refresh कर देता है. आप वो भागने के लिए, कुछ भागने से के लिए नहीं करते, आप अपने लिए करते हो. हाँ, तब आपको वो 2 दिन का गेट अवे भी ना बहुत अच्छा लगेगा, आपको फुल फील होगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, सिर्फ जाके इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी नहीं बनाई है, कि आई एटलीस्ट आई एंजॉयड दैट व्यू, नो, आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, सो जब वैसे मैं ट्रैवल करता था, जाता था, वापस आता था, फिर वही दैट अगेन दैट ब्लैंकनेस, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था. देन आई स्टार्ट डेवलपिंग कि भाई प्रॉब्लम क्या है, देन आई स्टार्ट ब्लॉगिंग. जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगा तो देन आई फील किया अब थोड़ा सा सही लगता है, देन व्हेन आई वाज ब्लॉगिंग नो, तो उस टाइम पे मैं उस टाइम पे प्रेजेंट रहता था, मेरे को बैकड्रॉप में कुछ चल नहीं रहा था कि मैं वापस ऑफिस जाना है, मैं उस टाइम प्रेजेंट रहता था. हाँ, आल्सो एंजॉयिंग दैट मोमेंट, व्हेन यू एंजॉय समथिंग नो, देन यू फील फुल, अदरवाइज देन वो फिर वो
ब्लैंक लेंस हो जाता है। Absolutely. ओके सो अच्छा, जब हमने अपना ये शेड्यूल किया था तो आई आस्क्ड मेनी क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, सो मेरे आई रिसीव्ड 20 क्वेश्चंस। ओके Okay. तो मैंने उसको That's 5 good. में डिवाइड किया है, तो आई विल आस्क 5 क्वेश्चन, आई जस्ट रीड इट आउट। वन क्वेश्चन इज इन हिंदी Certainly. एंड All right.